हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा माइनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मॉडल, सरप्राइज्ड एंड अनसरप्राइज्ड लर्निंग, और एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्क्वायर विद कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मॉडल। सबसे पहले देखते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मॉडल। मैं आपको इस टेबल के फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन, assume a specific functional form for the relationship between input and output। तो पैरामेट्रिक मॉडल, ये मॉडल अज्यूम करते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच एक स्पेसिफिक फंडामेंटल फॉर्म या इक्वेशन होती है। एंड नॉन मेक नो अजम्पशन अबाउट द फॉर्म, लर्न्स द रिलेशनशिप फ्रॉम द डाटा। सो नॉन पैरामेट्रिक ये कोई अज्यूम नहीं करते हैं, रिलेशनशिप डाटा से ही लर्न करते हैं। So fixed independent of dataset size, पैरामेट्रिक फिक्स नंबर ऑफ पैरामेट्रिक डाटासेट साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कैन ग्रो विथ डाटासेट साइज, पैरामेट्रिक इंक्रीज हो सकता है, डाटासेट जितना बड़ा मॉडल उतना कॉम्प्लेक्स होगा। सो लेस फ्लेक्सिबल मे फेल इफ द ट्रू रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स। तो लेस फ्लेक्सिबल, अगर एक्चुअल रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो तो फेल हो सकता है। And non-parametric model highly flexible can model complex relationship, highly flexible complex relationship को handle कर लेते हैं। Can perform well with small data set and require large data set to achieve good performance, generally faster and less computation intensity, can be slower and more computation intensive, easier to interrupt due to fixed parameter, often difficult to interrupt model structure, risk of understanding model assumption are incorrect, risk of overfitting if model is too flexible on data. So parametric high risk of underfitting होता है, and नॉन पैरामेट्रिक मॉडल हाई रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग होता है। एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिक रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर्स, डिसीजन ट्री। यूजर केस, व्हेन यू हैव प्रियर नॉलेज अबाउट डाटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन और स्मॉल डाटा सेट, जब आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया हो या डाटा कम हो तब इसका यूज करते हैं। व्हेन द डाटा रिलेशनशिप इज अननोन और हाईली कॉम्प्लेक्स, जब रिलेशनशिप अननोन हो या हाईली कॉम्प्लेक्स हो तब हम इसका नॉन पैरामेट्रिक का यूज करते हैं। अब सेकेंड हम देखेंगे supervised and unsupervised learning. First definition, learning for labeled data, learning for unlabeled data। तो सुपरवाइज लर्निंग लेबल्ड डाटा इज लर्निंग होती है, इसमें अनलेबल्ड डाटा इज पैटर्न डिस्कवर होता है। गोल हमारा प्रिडिक्ट आउटपुट और क्लासिफाई न्यू आउटपुट, डिस्कवर हिडन पैटर्न, ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर डाटा, require labeled data set, work with unlabeled data set, learn mapping, learn the structure or distribution of input data, predict value or class level, cluster association or dimension, accuracy, sell out score, explain variance, clustering quality measure. Example linear regression, logistic regression, random forest, K-mean clustering, hierarchical cluster, principal components analysis, application stock prediction, spam detection, fraud detection, medical diagnosis, customer segmentation, anomaly detection, feature extraction, data exploration. इसका complexity can be simple or moderately complex depending on model, can be computationally intensity depending on method and dataset, usually interruptible especially for simpler model, often harder to interrupt especially in cluster or high dimension model. So accuracy, precision, recall, F1 स्क्वायर देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स,
A confusion matrix compare actual level with prediction level. बाइनरी confusion matrix, तो ये हमारी बाइनरी confusion matrix है. तो meaning of each turn true positive, these are enable there are actual spam and not model correctly predicted then as spam. मॉडल में स्पैम को स्पैम करेक्ट डिटेक्शन ऑफ स्पैम मैसेज. FN का मतलब false negative emails that are spam but model wrongly predicted them as not spam. This is dangerous because spam goes undetected. FP का false positive emails that are not spam but model incorrectly predicted. True negative email that are not spam and the model correctly identified then as not spam. This is the perfect normal emails remain. Now using the confusion matrix, let's describe each matrix in details. So first है हमारा accuracy. इसकी definition accuracy measure how often the model is corrected. It tells you out of all emails how many were correctly classified. So measure overall correctness. Formula है हमारा TP plus TN upon total samples. But implaced data में misleading हो सकती है. Interruption concept all correct prediction both spam detection correctly and normal email detection. Accuracy can misleading but data imbalanced. Test mining meaning in email classification accuracy so overall correctness of the spam filter. Second हमारा Precision answer the question when the model predict spam how often is it actually spam. So formula हमारा TP upon TP plus FP. Interpretation out of all emails the model marked as spam. Precision tell how many were truly spam. It presents like false positive cases where normal emails were wrongly marked as spam. Text mining meaning high precision means the spam filter rarely mark a normal email as spam. User don't miss important email. Low precision means many genius mails are incorrectly filtered. Third है हमारा recall. Recall answer the question out of all actual spam emails how many did the model successfully detect. इसका फॉर्मूला TP upon TP plus FN. Interpretation recall focus only the positive classes. It penalize false negative cases where spam slipped into the inbox. Text mining meaning high recall means the model catch almost all spam. Low recall means the model misses many spam messages which is dangerous. Fourth हमारा F1 square. F1 score is a combination of precision and recall in the harmonic mean, which give a balanced score. Formula 2 into precision into recall upon precision plus recall. F1 score become useful especially when data is imbalanced. It balances precision, how accurate positive prediction are. Recall how many positive the model found. Text mining good F1 square means the model catches spam efficiently and rarely labels normal emails as spam. It is considered one of the most reliable performance indicators or spam detection. So complete understanding summary. तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक सरप्राइज अनसरप्राइज लर्निंग एक्यूरेसी प्रिसिशन रिकॉल F1 with confused matrix. So thank you watching this video. See you in next video.